Good evening, listeners, and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ टी.के. अरुण। अरुण जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है एस. रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Prime Minister Narendra Modi says technology is a tool for giving momentum to India's growth trajectory. Mineral production increases by 4.6% in February this year and key domestic indices end flat. Sensex closes at 61,905 points while Nifty settles at 18,297. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रमुख उपकरण है। खनिज उत्पादन इस वर्ष फरवरी में 4.6% की वृद्धि में रहा और प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स 61,905 पर और निफ्टी 18,297 पर हुए बंद। And now for all the details, let's start off with the science and technology sector. Prime Minister Narendra Modi has said that technology is a tool for giving momentum to the country's growth trajectory. He was addressing a function in New Delhi on the occasion of National Technology Day today. The Prime Minister reiterated that today, at the initial period of Amrit Kal, the goals for 2047 are clear before us. He stated that the nation has to be made Viksit and Atmanirbhar. The Prime Minister emphasized the need for creating an inclusive ecosystem for growth, innovation and sustainable development goals. He underlined the importance of technology at every step and said India is moving forward with a holistic and 360-degree approach in this regard. Mr. Modi said India considers technology as a tool for the nation's progress, not a means to assert its dominance. On the success of Unified Payments Interface or UPI, the Prime Minister said Indians have embraced digital payments and now UPI has become the new normal. He said that there was a time when carrying debit and credit cards in pockets was a status symbol, but today the country's UPI has become a new normal due to its simplicity. Mr. Modi added that the revolutionary initiatives including the JAM Trinity, CoWIN, eNAM have been agents of inclusion and have brought an unparalleled digital revolution in the country. Arun, to talk about this particular aspect, we actually used to talk and discuss a lot about the digital divide, but in the last couple of years the digital divide, especially between rural India and urban India, has come down a lot, isn't it? To a certain extent, in terms of being able to access digital products, the divide has come down somewhat. But in terms of being able to produce digitally, that divide still remains. We are going to enter a very different kind of a world with 5G. 5G is a technology that allows communications to be not just fast, but also with very low bounded latency. Meaning, latency is a gap between when you send out a signal and you get the desired result. This being low and being steadily low, that is bounded, is very, very key for a whole lot of new applications. What applications will be created using 5G in combination with robotics and artificial intelligence, we cannot really foresee right now. But revolutionary things will happen. Whether these will happen in India or in China or in some other country, we don't know. But wherever 5G is implemented well, this new technological revolution will happen in human capability, in human enrichment of life. This change will happen. And for that to happen in India's rural areas, we need a little more of this production capability in digital technologies to be narrowed between the urban and rural areas even now. So, आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ द अननोन भी है, रेगुलेशन की भी ज़रूरत है,
और जैसा आप कह रहे हैं कि रूरल एरियाज हैं उसमें और ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत है कि ये जो सुविधाएं हैं ये पहुंचे। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर हम अभी तक जो अचीव हुआ है उसकी बात करें तो आपको लगता है कि सरकार के द्वारा जो गवर्नेंस है, जो सरकार की कहें कि स्कीम्स हैं या जो उनकी सुविधाएं जो वो देना चाहते हैं हमारे नागरिकों को, वो मोर एफिशिएंट हो पाया है, गवर्नेंस में मदद हुई है टेक्नोलॉजी के द्वारा? जब से हमने आधार की शुरुआत की और उसके ऊपर ये इंडिया स्टैक बोल के एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसका प्रबंधन किए, उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्रेस हुआ है कि इंडिया कुछ चीज़ों में दुनिया के सबसे आगे है। प्राइम मिनिस्टर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जो अकाउंट एग्रीगेटर का सिस्टम हमने किया है, दिस इज द कंसर्न लेयर ऑफ द इंडिया स्टैक, विच मीन्स इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर विथ माई परमिशन I can ask an account aggregator to collate the entire record of my recent financial activity, of my borrowing, of my repayment, of interest payments, my purchases, my sales, my GST payments, my input tax credit, all the financial transactions of my company, which will give a holistic picture of what is the status of my company to a would-be lender. This is far better the real time as compared to an annual report or audited accounts, and this is something that India has been able to do, no other country. So we have made substantial progress, but I am saying in relation to the potential that awaits us, we still have to equip our rural people with a great deal more. Yeah, Arun, today the country is celebrating, National Technology Day, and don't you think, our scientists and the entire fraternity has a unique selling point? The USP is that they do with, very less and frugal innovations, technology, in Hindi as we call it jugaad, so quite a lot is used that way, and innovations come up, we commercialize them, vis-a-vis if we were to see about the scientific fraternity in European countries or in America, they do probably the same thing but at a much higher cost. हमें तो lower cost का advantage तो है ही ये, and this is something we should leverage to achieve much more. प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दैट हमारे लिए टेक्नोलॉजी किसी को डोमिनेट करने का ये नहीं है. सो ही कैन ओनली से दैट. इट इज गुड दैट ही सेज दैट, बट टेक्नोलॉजी इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी. हियर वी हैव अ नॉर्दर्न नेबर who has claims on our land and who is now trying to develop the most advanced technology on their own. Now that America has denied them access to advanced American technology in microchips, in artificial intelligence and such areas, they are trying to develop them on their own. And it is vital that India also acquire this capability, which is why the government has announced these schemes to fabricate advanced microchips in this country. And we are giving lots of subsidy to do this. So technology is a key determinant of our strategic capability, and not just for economic development, but obviously the Prime Minister doesn't want to suggest that India is promoting technology to increase our defense or armed capability, which is good, but we should understand this is vital for us as a nation on all fronts, in healthcare, in economic progress, in financial capability, in military capability. इनफैक्ट इस जो टेक्नोलॉजी डे है जो आज इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने, उसका थीम भी है स्कूल्स टू स्टार्टअप्स. सो यहाँ पर एक जो बल दिया जा रहा है कि स्कूल स्टेज से ही बच्चों में विकसित किया जाए इनोवेशन का जो एक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट. इनफैक्ट कहा गया है कि टिंकरप्रेन्योरशिप, जो अटल टिंकर लैब्स हैं, उनको जितना ज्यादा बच्चे यूज करेंगे तो उनमें एक माइंडसेट डेवलप होगा एंटरप्रेन्योर्स बनने का, स्टार्टअप्स का. सो ये स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो पिछले 3-4 साल में भारत में आई है, वो आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है और वो टेक्नोलॉजी पर कितनी आधारित है? तो सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पे नहीं है, कुछ तो
इनोवेशन पे है. इनोवेशन बिना टेक्नोलॉजी के भी इनोवेशन हो सकते हैं. अब देखिए अभी नया कंपनी है योगा बार या नाइका. दिस इज इन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स. योगा बार इज इन फूड. They are not really technology companies. They are also part of the unicorn models. India has the third largest number of unicorns in the world after the US and China. So it is good. लेकिन एक बात हम भूलना नहीं चाहिए. As a percentage of GDP, research and development पे भारत का खर्चा है 0.7% of GDP. कोरिया का है 3.4%. चाइना का है 2%. अमेरिका का है 2% के आसपास. अगर हम ये एक्सपेंडिचर बढ़ाते नहीं है, देन आवर एबिलिटी टू कीप पेस विद डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड विल सफर. ओके. सो आपको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो बल दिया जा रहा है उसको और गति देने की जरूरत है. बिल्कुल. But Arun, at the same time, don't you think there needs to be more linkage between the industry and the research institutions in order to commercialize whatever innovation is made, whatever new discoveries, inventions are made? Because many times we get to read about these innovations in newspapers, in media, but they never see the light of the day through commercialization and for the benefit of the larger masses. This is not really because there is no linkage. It is more because our regulatory systems are archaic. अब देखिए सन 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का तब का वाइस चांसलर प्रोफेसर पेंटल ने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का इनोवेशन की. हाल ही में अभी उसका कमर्शियल रिलीज हुआ है ना. इतने साल लगे हमें उसका क्लियरेंस देने में. ये तो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं था, ना कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम. बीच में जो हमारे रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है वो सालों से, अभी का नहीं है, सालों से स्टक है. अभी उसमें थोड़ा स्पीड आ रहा है, ये अच्छी बात है. आइए लेते हैं अगली खबर. मौजूदा राबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के दौरान इस वर्ष की 9 तारीख तक इस महीने की 9 तारीख तक लगभग 252 लाख मेट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीदारी की जा चुकी है. उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार पिछले वर्ष के मार्केटिंग सीजन की तुलना में इस अवधि में ये आंकड़ा 75 लाख मेट्रिक टन अधिक है. अन्य स्टेट एजेंसियों के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं की खरीदारी का संचालन कर रहा है और पूरे देश में गेहूं की बिक्री करने वाले राज्यों में खरीदारी सुगमता से जारी है. चावल की खरीदारी भी सुचारू रूप से की जा रही है. क्या कहेंगे आप एक ऐसे समय पर जब फूड सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक इशू है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धान हो और ये जो खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है, इसका क्या महत्व आप फिर कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? तो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी बहुत अहम बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है. नो सर, फूड सिक्योरिटी नहीं है. हम इसको इस्तेमाल करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को उसमें देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा इसके इस्तेमाल करते हैं. उन सब के लिए पर्याप्त गेहूं और धान हमारे पास है. तो अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक फोरकास्ट है कि इस साल में फूड प्राइसेस विल कम डाउन बाय 7% गिरेंगे. पिछले साल तो एकदम ऊपर गए थे, इस साल गिरेंगे. तो फूड सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं था. तो आपको लगता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब वो स्टेबिलिटी आ गई है? स्टेबिलिटी आ रही है. एक बात तो यूक्रेन से और रूस से दोनों जगह से अभी निर्यात हो रहा है गेहूं का, फर्टिलाइजर का. उसमें रुकावट आ सकता है, उसमें चर्चा चल रही है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो निर्यात हो रहा है अभी तक. फिर बाकी देश भी अडैप्ट कर लेते हैं. देखते हैं कि यहाँ से इतना निर्यात नहीं होता है तो बाकी कंट्री भी ज्यादा दे सो मोर व्हीट एंड द क्रॉप एरिया गोज अप. So, but it is good that we are able to, maintain our stocks in case of an emergency. Right. From agriculture, let's move to the mining sector.
India's overall mineral production increased by 4.6% in February this year as compared to the level of same month last year. Important minerals showing positive growth during February 2023 include phosphorite, which went up by 60.2%, coal 8.3%, iron ore 7.4%, lead 7.3%, natural gas 3.2%, zinc 1.1%, and copper by 0.5%. A release by the Ministry of Mines said that as per provisional figures of the Indian Bureau of Mines, the cumulative growth for the period April to February 2023 over the corresponding period of the previous year comes to 5.7%. Production level of coal was at 861 lakh tons and lignite at 41 lakh tons. So good news for the economy, Arun, isn't it? Yes, especially that of coal. You know, we have the fourth or third largest deposits of coal in the world and yet we are forced to import coal because our domestic production is low. That it is increased by 8% is very good news. At least it will reduce our dependence on imported coal and that will save us foreign exchange and ease the pressure on the balance of payments. So, and it also signals that the economy is actually going to grow rather than, stagnate. Yes. Only then would you need the requirement of so much of minerals. Plus, I was reading today's newspaper that our export of bauxite has gone up to Russia because so it is good. So mineral production always indicates that the demand for the sectors which use minerals as input it is going up, and the economy is hale and hearty. Well, hale and hearty, it can become more hale and hearty. At least it is not emaciated. और एक और जो इस सरकार का एक कहें कि उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनने का, विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता, उसके लिए भी जरूरी है कि मिनरल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है इंडस्ट्री के लिए, उसमें लगातार वृद्धि होती रहे. So Atmanirbhar actually it doesn't mean that we should be producing everything ourselves. Mm-hmm. It means that we should be capable of procuring whatever we need ourselves. So sometimes we'll need to trade to get something that we don't have. अभी हाल में ये पता चला कि कश्मीर में कुछ रेयर्स की डिपॉजिट है. अच्छी बात है. Otherwise the world is dependent on China for rare earths. And that's a very dangerous kind of dependence. Similarly, for all the materials that go into electric vehicle ecosystems, battery, lithium, cobalt, nickel, in सबका control अभी चीन के हाथ में है. So it is important that we develop our production and refining capability if you want to have a battery storage more based e-vehicle ecosystem. So इसमें आपको लगता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम, उस तरह की जो इंसेंटिव्स देते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो भी यूजफुल रहेंगे? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम कुछ बूस्ट दे रहा है. उसके अलावा भी अगर उसका डिमांड हम जनरेट करते हैं, लोग आके प्रोड्यूस करेंगे. तो आफ्टर ऑल पीपल इन्वेस्ट व्हेन दे सी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द मार्केट. आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के उद्योग जगत को भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है, जिसका उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों तक समृद्धि पहुंचाना है. सोमवार को शुरू हुई कनाडा की 3 दिन की यात्रा के दौरान श्री गोयल टोरंटो में भारत और कनाडा के सीईओज की राउंड टेबल बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत वस्तु और सेवाओं में उच्च कोटि के मानकों पर ही बल नहीं दे रहा, बल्कि इन वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता वाली डिलीवरी पर भी पूरा ध्यान दे रहा है. श्री गोयल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता पर यह बल कनाडा के उद्योग जगत और उनके निवेश के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सुरक्षित और सुगम व्यापार वातावरण में कनाडा के व्यापारी सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं. सो एक हमारे पास जो एक एडवांटेज है बहुत बड़ी मार्केट का, जैसा उन्होंने कहा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, अगर हम पूरा अपने एक मार्केट की तरह देखें पूरे देश की जनता को, और जो सुगम वातावरण है, व्यापार वातावरण, आपको लगता है कि इससे एफडीआई और बढ़ने की हम आशा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अब देखिए, अब दुनिया में एक एसिमेट्री है. ये पूरे रिच नेशन जो है
दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली ओल्ड नेशंस. वहाँ की लोगों की एज देखा जाए तो काफी बढ़ चुका है. हमारे देश यंग है और यहाँ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. अगर उन्होंने अपना पेंशन के लिए सेविंग कर रखा है भी तो उसको कहीं निवेश करना है, तभी तो रिटर्न मिलेगा. कहाँ निवेश करेंगे? उन जगह पे निवेश करके इतना रिटर्न मिलने का अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो ज्यादा है हमारे जैसे देशों में. तो बिल्कुल अगर कनाडा जैसे देश हमारे यहाँ पे निवेश करेंगे तो दे कैन एक्चुअली ग्रो एंड जनरेट रिटर्न फॉर देयर ओन पीपल. जी. और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बिना किसी की खास बदलाव के बंद हुए. सेंसेक्स 61,900 के करीब और निफ्टी 18,300 के नीचे बंद हुए. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 36 अंक कम होकर 61,905 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18 अंक टूटकर 18,297 हो गया. व्यापक बाजार की बात करें तो यहां आज बढ़त का रुख था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.36% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.68% की वृद्धि दर्ज हुई. Well, as Sonu just mentioned, key domestic indices ended flat today amid mixed global cues. The BSE Sensex closed near 61,900 points, while the Nifty settled below 18,300 level. The Sensex fell 36 points to finish at 61,905. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 18 points to close at 18,297. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index rose 0.36%, while the small-cap index moved up 0.68%. In the Sensex pack, out of 30 companies, shares of 22 firms rose, while 8 fell. Asian Paints surged 3.2%, Power Grid climbed 2.8%. NTPC gained 1.4% and IndusInd Bank rose 1.3%. On the other hand, Lawson and Tubro declined 5.3% and ITC fell 1.2%. Bharti Airtel slipped almost 1%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors posted gains while 6 suffered losses. Power and services sector rose 1.3% each. Utilities index added 1%. On the other hand, capital goods slipped 1.9%, consumer durables fell 1.3%, and industrial sector ended 0.9% down. The overall market breadth was positive as shares of 2,034 companies rose while those of 1,446 companies fell. A total of 152 companies, however, remained unchanged. Arun, to talk about the stock markets, the Sensex in that range of 61,000-62,000 and also Nifty above the 18,000 level, so that's good news. And today it was a flattish kind of a trade, but by and large the sentiment seems to be intact. Oh yes, and this has to do with the state of the American economy. Their inflation has come down, the consumer price inflation has come down below 5%, and core inflation, that also has come down as compared to previous months. It is above 5%, but it is coming down. Core inflation coming down is key to encourage people to expect the Fed to stop increasing rates. अगर अमेरिका की सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाने की पॉलिसी बंद कर देते हैं, फिर मार्केट में और लिक्विडिटी आने की संभावना है. इसकी उम्मीद से लोग शेयर खरीद रहे हैं. This is good news. So briefly, आपको लगता है FIIs का इन्फ्लो जारी रहेगा? अभी तो यही प्रॉब्लम है. अमेरिका में डेब्ट सीलिंग का एक मामला चल रहा है जी. अगर वो अमेरिकन कांग्रेस और सरकार के बीच में राजी नहीं होता है, कुछ दिन के लिए वहां के पारिया मार्केट बंद हो सकता है, तब तो कुछ टेम्पररी सेटबैक हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ना चाहिए. चलते हैं करेंसी बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 9 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 101.85 पर था. रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का तो अन्य एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था, सिवाय जापान के, जहां निक्केई सूचकांक मामूली वृद्धि पर बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4%, चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.3%, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई. हालांकि यूरोपीय बाजारों में दिन के कारोबार में हल्की तेजी थी. ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.6% की बढ़त पर था, जर्मनी के डैक्स में 0.1% की वृद्धि थी और लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था.
On to the उधर American markets now. इससे पहले कि आप बताएं यूएस के बारे में, ये बता दें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और ये लगभग 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आधार दर में अभूतपूर्व लगातार 12वीं बार वृद्धि की गई और ये 4.25 से बढ़कर 4.5% हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। On to the American markets now. The Nasdaq rose over 1% yesterday to its highest intraday level in more than 8 months. Similarly, the S&P 500 gained 0.5%, but the Dow Jones Industrial Average declined 0.1%. To talk about the US market, Arun, you spoke about the central bank, the Federal Reserve. Do you think, the Reserve Bank of India back home here also will take a cue and kind of have dovish kind of a stand? I think so. They already indicated that in the last policy statement. It was a status quo. There was no hike. Yes. But already Bank of England ने अपना 0.25% बढ़ा दिया है और वहाँ 10% को क्रॉस कर गया है। सो यूरोप से हम लोग इतने ज्यादा प्रभावित नहीं है जितने यूएस से। बिल्कुल, यूएस का ज्यादा प्रभाव है। सो आपको लगता है कि आरबीआई यूएस फेड को फॉलो करेगा? आरबीआई बेसिकली हमारी इंटरेस्ट देखेंगे। हमें अभी ग्रोथ की जरूरत है, ज्यादा निवेश की जरूरत है, लेकिन अगर हमने यूएस की मार्केट की फॉलो नहीं किया, हो सकता है कि हमारी रुपी गिरे और डिप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आ जाए। अगर ऑयल की प्राइस में अगर वृद्धि नहीं हुआ भी, सिर्फ डिप्रिसिएशन की वजह से डोमेस्टिक ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए दे मेंटेन some sort of interest rate parity. Yeah, but Arun, back home here also, inflation is a sticky problem. We have been trying to tackle it, but despite that, it is above that comfort zone of 4 to 6%. No, now it has come down. Yeah, now it is within the band, and the RBI expects it to stay comfortable. But briefly, आपको लगता है इसमें भी बैलेंस की जरूरत है? चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.1% आया है, तो that is also being seen as a cause for worry, too low. So it should neither be too low nor too high. But it is going there. Economic activity is actually increasing its pace. चले commodities की ओर। Yeah, let's take a look at the oil prices. Oil prices bounced back today, supported by stronger fuel demand data from the United States, the world's top oil consumer. Prices had dropped by more than $1 per barrel yesterday. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.72 per barrel, while West Texas Intermediate crude price was at $72.80 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य 195 रुपए की बढ़त से 61,465 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 735 रुपए की गिरावट से 75,955 रुपए प्रति किलो पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $2,037.90 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी मंदी के साथ $25.16 प्रति आउंस पर थी। हमारे पास 20 सेकंड है। ब्रीफली तेल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है ये सब 80 लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं, सब $80 पर बैरल? मेरे ख्याल से वही होगा और ये भारत के लिए अच्छा है। हम तो वैसे कम रेट पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर ही रहे, and I think that will continue to help us. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर इतनी विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for giving me the opportunity. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi says technology is a tool for giving momentum to India's growth trajectory. Mineral production increases by 4.6% in February this year, and key domestic indices end flat. Sensex closes at 61,905 points, while the Nifty settles at 18,297. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.